Hello students, this video is for class 12 commerce students and today we will start second book of volume 1 and first chapter accounting for share capital, and today we will study only the basic concepts of this chapter. Okay, so let's start. So this book starts from company's account. Okay, so first you should know about company, that what is company. So student, in class 11th you have studied the chapter journal entry, even all the chapters. If you remember that all the questions were starting like that: A Limited has started business, ABC company has started business, or Ravi and Shyam has started the business. So these all questions were based on the different types of business, and in 12th class you are studying different types of business. Like in book 1 you have studied about partnership firm, that how we do all the accounting treatment when we have partnership firm type of business. Now we will study how we will do all the accounting treatments if we have company. Okay, so first of all, what is company? Company is also a business. I will tell you in a very simple language, then you will think that it's a very easy commerce. Okay, so company is nothing, it's also a business which is registered through Companies Act 2013. Which business is registered through Companies Act 2013? That is called company, and it has features. So now we will study about some features that you can include in your definition of your company. So first is that company is an artificial person. Company is an artificial person means company has a separate legal entity. Yes, means every transaction we will record according to company point of view, but company can't do its all work on its own. That's why it's an artificial person. It has some members to do its work. So that's why the first feature is that company is an artificial person, separate legal entity. Second, perpetual succession. The meaning is perpetual succession means that continuation existence. Means we always think when we start the business that we will not end the business after some years. So company also has this feature that it has perpetual succession. Okay, now third is very important, limited liability. Third feature is limited liability. Limited liability, I think you already know the meaning of this, that like you have done partnership firm and all the partners of the partnership firm, they have unlimited liability, means they have to pay their debts. They have to pay the debts of the partnership firm of their business. Maybe they can use their own assets, but in the condition of company, members of the company, they have limited liability. They are not forced to pay the debts of the company by their own assets. Okay, so now fourth is common seal. This is also very important feature of company, common seal. The meaning is because company is an artificial person, just now I told you, that's why artificial person, that's why company cannot sign on any document. So company has a specific stamp, seal होती है जिससे कंपनी अपने हर डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगा के अपने सिग्नेचर करती है. ओके, सो दैट्स व्हाई द फोर्थ एंड मेन फीचर इज कॉमन सील. सो दीज आर द फोर मेन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ कंपनी in this, first is one person company, second private company, and third public company. And which we are going to do that all the accounting of share capital that is related to
public company. Why? That's also I am explaining you. One person company and private company means both are same. One person is also a like private company. These are the company when I have registered, I have an idea to start a business and I have registered my business through Companies Act 2013. Okay, and I am investing the capital, so that type of company will be called one person. I with other persons, my relative, my cousins, जो भी है, मैं और कुछ और लोग मिलके प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और हम सब मिलके उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी. दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी बट दिस इज ओनली वन पर्सन कंपनी. ओके, नाउ कम टू पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो company, it also has to be registered through Companies Act 2013. So I have an idea again to start a company and I have registered also through Companies Act 2013. But main point is that according to my idea I need 10 lakh rupees to start my company. Like the question you have studied that ABC Limited, ABC company has started the business and the company has invested 10 lakh rupees capital. तो capital से ही start होता है business, but this much of amount I don't have. I am starting a company but I don't have the amount. तो ये जो amount है, this amount I will take from public. मैं किससे लूँगी? Public से. अब क्या होता है? Now I am going and I am telling to one person or two persons that you give me 10,000 rupees. Will they give? Yes. No, they will not give. एक या दो, कोई भी पर्सन या तीन मिलके मुझे इतना ह्यूज अमाउंट नहीं देंगे. So what to do? Now what will I do? I will distribute, means divide this huge amount into small denominations. मैं इस बहुत बड़ी अमाउंट को 1 लाख है या 5 लाख है या 10 लाख है, जितने से भी कंपनी स्टार्ट करनी है, हम उसको स्मॉल डेनोमिनेशंस में डिवाइड कर देंगे. सपोज तो वो जो हम स्मॉल डेनोमिनेशंस में डिवाइड करते हैं अपनी टोटल कैपिटल को, दीज आर कॉल्ड शेयर्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर्स. ओके, टोटल कैपिटल डिवाइडेड इन स्मॉल डेनोमिनेशंस आर कॉल्ड शेयर्स. तो मैंने, और दिस इज ऑल्सो माई डिसीजन दैट माई कंपनी वन शेयर प्राइस विल बी वॉट. क्या होगा मेरी कंपनी के एक शेयर का प्राइस? सो मैं रख रही हूँ अपनी कंपनी के एक शेयर का प्राइस ₹100. कितना रख रही हूँ? ₹100. सो इट मीन्स हाउ मेनी शेयर्स आई हैव टू इशू. कितने शेयर्स मैं इशू करूँगी पब्लिक में? अभी मैंने बताया कि मैं ये अमाउंट किससे लूँगी? पब्लिक से. तो पब्लिक ऐसे ही तो मुझे आके पैसे नहीं देगी दैट यू टेक 1,000 रुपीज़, यू टेक 10,000 रुपीज़. नो, nobody will give like this. How will they give? I will give them the shares of my company to the public and उसके बदले में the public will give me money according to the number of shares. So I am putting one share price 100 rupees of my company. मेरी कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है? 100. तो अगर हम टोटल कैपिटल को 100 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 10,000 shares. It means my company is issuing 10,000 shares. So these are shares. These are shares and this is the price of one share. Okay. Now what is share capital? Share capital. Some new words are there now in accounting: share, share capital and shareholders. All the three words which are new for you I will explain you. Shares I have already told कि जितनी टोटल अमाउंट मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए थी उसको मैंने स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर दिया है. उसके अकॉर्डिंग मेरे जो शेयर्स आते हैं वो कितने आए कंपनी के? 10,000 शेयर्स. इट मीन्स मैं पब्लिक में जाके 10,000 शेयर्स इशू करूँगी कि शेयर्स ले लो, मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो. तो सपोज एक पर्सन मेरी कंपनी के 500 शेयर्स ले रहा है, ठीक है, और मेरी एक शेयर का प्राइस कितना है? 100. सो दैट पर्सन विल गिव मी 50,000 rupees. And like this so many people will
purchase my company shares, and like this I will get total capital. So what is share capital? Which amount I am collecting through shares from public. जो अमाउंट कलेक्ट की जा रही है शेयर्स के थ्रू पब्लिक से है तो वो भी कैपिटल कंपनी की, बट दिस इज वी आर गेटिंग थ्रू शेयर्स by the people public. These are called that amount is called share capital. Okay, कैपिटल वही होती है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अगर वो कैपिटल हम शेयर्स के थ्रू मिल रही है हमें तो वो कैपिटल क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल. सो आई थिंक दीज टू वर्ड्स आर क्लियर. नाउ शेयर होल्डर्स. So the person who all are taking the shares of my company and giving me money, these all are shareholders of my company. Okay, these all are shareholders of my company. Like I have told you here that one person has taken 500 shares of my company, so this person is shareholder of my company. Okay, so these are the basics of shares. Now we will study more about shares. There are two types of shares, equity and preference. Equity shares and preference shares. Now I will tell you about these two types of shares. Okay, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा प्रेफरेंस शेयर. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई वांट टू टेल यू वन मोर न्यू वर्ड, डिविडेंड. एक और नया वर्ड आपके लिए, डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? नाउ सी, डिविडेंड इज नथिंग, इट्स ऑल डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट. बट why we have given a new name to the profit, dividend? Because profit is the complete amount which company is earning. Profit is the complete amount which company is earning, and dividend is the part of profit which we are giving to shareholders, which we give to shareholders. Dividend profit का वो पार्ट होता है जो हम shareholders को देते हैं. तो dividend यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी था. प्रेफरेंस और इक्विटी. प्रेफरेंस मीन जिन्हें प्रेफरेंस मिलती है, किस चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है? डिविडेंड में. किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? डिविडेंड में. सो द पीपल मीन्स द शेयर होल्डर्स विच हैव टेकन प्रेफरेंस शेयर, ओके, दे हैव द फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड ऑन देयर शेयर. मीन्स प्रेफरेंस शेयर के आगे पहले ही मेंशन होता है कि वो 10% प्रेफरेंस शेयर है, 12% प्रेफरेंस शेयर है या 15% प्रेफरेंस शेयर है. तो जितना भी परसेंटेज डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिविडेंड मिलेगा एवरी ईयर. सो इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज द राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्टली फ्रॉम द कंपनी. After that, if profit is left in the company, then they will distribute their profit into equity amongst equity shareholders. Okay, तो इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद जितना प्रॉफिट कंपनी में बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज दैट व्हाई शुड द पब्लिक टेक इक्विटी शेयर्स? Because they have the risk that if the company will have the profit, then they will take it, otherwise they will not take it. उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है. So why to take equity shares? So there is a reason behind it. The reason is that equity shareholders are like owner, means members of the company. अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है तो आपको इक्विटी शेयर्स लेने होंगे, क्योंकि वो एक तरह से ओनर का ही काम करते हैं, मेंबर का काम करते हैं कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो है इतना कि हमें मिल जाए तो हम ले लेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे. आप पहले प्रेफरेंस शेयर्स को होल्डर्स को प्रॉफिट दे दो. और क्या प्रॉफिट होता है और क्या बेनिफिट है इनका? एक बेनिफिट तो मैंने आपको ये बताया, they are the members of the company, so they have right of vote
in the company, then they can participate in voting, they can participate in decisions of the company. And one more benefit is that suppose in a year company has earned so much of profit that after giving dividend to preference shareholders, company again, means after that also company has so much of profit, and the whole profit which is left, this is will be distributed amongst equity shareholders. इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो तो फिक्स्ड है कि 10% है, 10% ही मिलेगा, 12% है तो 12% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जो डिसाइडेड है. लेकिन इक्विटी शेयर्स को अगर ऐसा है कि कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी है कि कभी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. दिस इज अप टू प्रॉफिट ऑफ दी कंपनी. तो कभी अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें ज़्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, नहीं है तो नहीं भी मिलेगा. लेकिन ज़्यादा के केस में भी ज़्यादा मिलता है, ये भी उनको प्रॉफिट है. और दूसरा प्रॉफिट ये है कि दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके, so I hope that difference between preference shares and equity shareholders are clear to you. There are so many types of preference shareholders also. शॉर्ट में बता देती हूँ. फर्स्ट होता है आपका क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. Cumulative and opposite of that, cumulative and non-cumulative preference shares means suppose in one financial years you have the company has not earned the profit, and next financial year company has earned the profit. So those who have taken cumulative preference share, they will get combinedly both financial year dividend, but those who have taken non-cumulative preference share, they will get only in that financial only dividend in that financial year in which company has earned. Okay, second, participating and opposite of that, non-participating. So participating और non-participating तो नेम से ही क्लियर हो रहा है. Those who have taken participating preference shares, it means they will participate in some work in the company. वो कंपनी में किसी वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे, तो so they will get dividend also which is fixed, and after that they will give some more profit from the profit of the company for more dividend. But those who have taken non-participating preference share means they don't want to participate in any work in the company, so they will get only the fixed dividend. Okay, ये वो लेते हैं द पर्सन जो सिर्फ घर में बैठ के प्रॉफिट लेना है, उनको कोई टाइम नहीं है कि वो कंपनी में जाके किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करें. ओके, नाउ आफ्टर दैट रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल मीन्स ऑपोजिट ऑफ दैट. रिडीमेबल मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो आपको एक एंड लाइफ के साथ मिलते हैं, दैट 5 years 6 years जो भी आपका फिक्स्ड है. उसके बाद आफ्टर दैट दोज हु हैव टेकन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो उसको रिडीम करा सकते हैं आगे कंटिन्यूएशन में ले जाने के लिए. बट दोज हु हैव टेकन इररिडीमेबल, उनके वहीं पे उनकी लाइफ वहीं पे एंड हो जाएगी. आफ्टर 5 years दैट शेयर होल्डर विल नॉट गेट द डिविडेंड. एंड द लास्ट वन इज कन्वर्टिबल and non-convertible. Convertible means if suppose one person has taken preference shares and after some years that person thinks that equity shareholders is in profit more than me and he wants to convert its share preference to equity, so they can convert if they have taken convertible preference share. But if they have taken non-convertible, so they cannot convert their share into equity shares. So these are the basic concepts of the company which can be asked in 1 mark, means short type answer of questions. So I hope this is clear to you.